The question now we have on the board is exercise question 2.14, which is what is meant by positive and negative deviations from Raoult's law and how is the sign of delta H mix related to positive and negative deviations from Raoult's law. So Raoult's law is used to calculate the vapor pressure of liquid solution. It is a theoretical approach, and in reality the vapor pressures may be different. So let's write the answer to the question. If the vapor pressure of a liquid solution is more than the vapor pressure calculated by Raoult's law, then the solution is said to be showing positive deviation from Raoult's law. So this is the positive deviation from Raoult's law. Now what is negative deviation? If the vapor pressure of a liquid solution is less than the vapor pressure of solution calculated by Raoult's law, then the solution is said to be showing negative deviation from Raoult's law. तो ये है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब हम बात करते हैं डेल्टा एच मिक्स। डेल्टा एच मिक्स है एंथैल्पी चेंज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स। अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एग्जांपल लें दो लिक्विड्स का, एक लिक्विड ए है और एक बी है, तो ए इंटरेक्शंस एंड बी इंटरेक्शंस अगर वीकर हैं एज कंपेयर टू
AB interactions. So in this case the enthalpy change will be negative, और enthalpy change अगर negative है तो the solution will show negative deviation from Raoult's law. ऐसे ही अगर AA interactions और BB interactions stronger हैं as compared to AB interaction, तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा H पॉजिटिव होगा, और डेल्टा H पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. सो लेट अस राइट इट. इफ डेल्टा H मिक्सिंग if delta H of mixing is positive, then the solution will show positive deviation from Raoult's law. और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? इफ डेल्टा H मिक्सिंग इज नेगेटिव, then the solution will show negative deviation from Raoult's law. So this is the answer to the exercise question 2.14.